So we have seen in the yesterday lecture tannins. So we have seen all that what is tannins and all that. Okay, introductory part of tannins. So most widely occurring secondary metabolites in the plants. Okay, so secondary metabolites of plant, they are the derivative of polyhydroxybenzoic acid, polyphenols or flavonoids. Okay, so then they are used in the various kind of elements, various kind of diseases. Like they are used to check the small hemorrhage. They are used to prevent the small hemorrhage. They are antiseptic. They are used in the treatment of diarrhea. They act as antidotes. For example, antidotes for alkaloid poisoning, because see, tannic acid is the component of universal antidote. That's why tannic acid can precipitate the alkaloids, and once it is precipitated, it cannot be absorbed from the stomach. So that's why tannins will act as a antidote also. Okay, so chemically they are the polyphenols, generally ortho-dihydroxy or ortho-trihydroxy groups on the phenyl ring. We have seen these physical properties also. So they will form a colloidal solution, non-crystalline. You see, you can see here the structure of different tannins or the component of tannin. So gallotannins on hydrolysis will give you gallic acid. Ellagic tannins will give you ellagic acid on the hydrolysis. So that is the structure of gallic acid. This is a ellagic acid. This is chebulic acid. Just for your polyhydroxy phenyl compound. See, 3-4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, फिनाइल रिंग होगा, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी फिनाइल का गैलोटेनिन जो होता है गॉलनट में होता है, ये गैलोटेन, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो गैलिक एसिड मिलेगा. इलाजीटेनिन्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इलाजिक एसिड मिलेगा. कल ये स्ट्रक्चर नहीं दिखा था मैंने. नाउ टाइप्स ऑफ टैनिन्स वी हैव सीन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, देन कंडेंस्ड टैनिन्स, देन pseudotannins. In case of hydrolyzable tannins, they are easily hydrolyzed, and the product of hydrolysis is nothing but the ellagic acid. Now upon dry distillation, hydrolyzable tannins will give you gallic acid, and the other component will be converted into pyrogallon. Example, gallotannins, rhubarb, clove, chestnut, we have seen this. Pomegranate bark, myrobalan. Next one is the condensed tannins. This also we have seen in the last lecture. Condensed tannins, they are not easy to hydrolyze, and if you try to hydrolyze them, they will get polymerized into a, get polymerized. They are related to catechin or flavin 3 or flavin 3 for diol. So upon dry distillation, they will give you catechol. Hydrolyze them, they will get polymerized into a red color substance known as a flavonoids. Yesterday we have seen this. Then pseudotannins. So example of this condensed tannins: green tea, cinchona, cinnamon, wild cherry bark, pale catechu, Coca-Cola, etc. Black catechu. Third one was pseudotannins, which will not give gold bitter skin taste. They will give you chlorogenic acid taste. They are related to chlorogenic acid. For example, nux vomica, coffee, catechins from coca. So we have seen the taste also. So just remember the gold bitter skin taste, vanillin, hydrochloride taste. This match stick taste for the catechins. So we have also, yesterday we have also completed 2 drugs. Third one is a black catechu. This one is a new drug. So black catechu. So actually this black catechu means what? आप जो भी पान खाने का शौक रखते हो, पान में जो कत्था यूज करते हो, उसको बोलते हैं ब्लैक कैटेचू. ब्लैक कैटेचू इज आल्सो नोन एज कत्था, कच और खदीर कैटेचू. इट इज आल्सो नोन एज कत्था, कच और खदीर कैटेचू. इट इज अ ब्लैक कैटेचू. सो हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द सोर्स? सो इट इज ऑब्टेन्ड एज a dried aqueous extract from the heartwood of Acacia catechu family Leguminosae. So it is a extract. It is a aqueous extract from the heartwood of Acacia catechu family Leguminosae. So it is an unorganized drug. It is not an organized drug. ब्लैक कैटेचू क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है. कैसे बनता है ये जो प्लांट होता है अकेशिया कैटेचू लेगुमिनासी फैमिली का, तो उसका जो हार्टवुड है, हार्टवुड मतलब इनर वुड, उसका एक्वियस एक्सट्रैक्ट जो है उससे प्रिपेयर किया जाता है ब्लैक कैटेचू. कैटेचू प्रिपेयर करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड है, 2 मेथड है उसके लिए. सो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? यू हैव टू सेपरेट द हार्टवुड ऑफ द प्लांट एंड यू हैव टू बॉयल इट इन अ अर्दन वेसल. अर्दन वेसल मतलब जो भी मिट्टी के घड़े होते हैं, तो उसमें आपको जैसे आप उसमें बॉयल करना है. सो सेपरेटेड हार्टवुड इज बॉयल इन द अर्दन वेसल अंटिल द सोल्युबल पोर्शन इज सेपरेट. जैसे उसका सोल्युबल पोर्शन और अनसोल्युबल पोर्शन जो होता है वो सेपरेट हो जाएगा. तो जैसे आप वो हार्टवुड सेपरेट करेंगे आप और उसको बॉयल करेंगे किसमें? मिट्टी के घड़े में, वेसल्स है, अर्दन वेसल्स. जैसे आपका मटका हो गया या फिर आपका दूसरा कोई मिट्टी से बना हुआ पॉट हो गया, उससे बॉईल करना. बॉईल करने के बाद तब तक बॉईल करना है जब तक 2 पोर्शन नहीं मिलते. उसमें 2 पोर्शन मिलता है, सोल्युबल पोर्शन मिलता है और एक इनसोल्युबल पोर्शन मिलता है और लेस सोल्युबल पोर्शन. सो लेस सोल्युबल पोर्शन इज नोन एज अ कत्था and semi-solid mass is known as a kach. On cooling, less soluble fraction will separate out from the solution, and less soluble fraction is known as katha. Semi-solid mass is known as a kach. After
ट्रांसफरिंग इनटू रेक्टेंगुलर पिट्स, जो रेक्टेंगुलर शेप के आपके जो डाइज होते हैं उसमें ट्रांसफर करना है, ताकि आप सेमी सॉलिड होने के बाद, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद वो एक क्यूब्स की तरह लगे और ब्रिक की तरह लगे. It is transferred into rectangular pit at the bottom of which there is a sand. So sand and clay will absorb the water soluble portion. Non-water soluble portion will not be absorbed. So in case of modern method, so you have to separate the hardwood from the plant mechanically. Then you can extract them with the steam extract, and under vacuum you have to cool them. So by refrigeration and centrifugation. So you can isolate kattha by centrifugation and refrigeration. The mother liquid remain behind after centrifugation is kach. So just remember, यहाँ पे दो मेथड है उसका. एक तो ट्रेडिशनल मेथड है ब्लैक कैटेचो ऑप्शन करने का, और मॉडर्न मेथड. तो मॉडर्न मेथड में आपको क्या, मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं आप, एक्सट्रैक्ट उसके बाद एक्सट्रैक्शन होने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो और वैक्यूम से, रेफ्रिजरेशन से उसको टू लिक्विड्स में सेपरेट करते हो. कत्था इज सेंट्रीफ्यूज्ड एंड इट विल डिपॉजिट एट द बॉटम. The mother liquid is nothing but the kach. In case of traditional method, just you have to separate the hardwood and you have to boil in a earthen vessel. After boiling, there will be a two portion. So after boiling, you have to cool that, and after cooling, you will get a two portions. So less soluble portion and semi-solid portion. So less soluble portion is known as a kattha, and semi-solid portion is known as a kach. Kattha is important. So this is transferred into rectangular pits at the bottom of which there is sand and clay. So sand and clay will absorb this is rest of the impurities. So you will get a cut. Now it is not much important. Just remember acacia catechu, hardwood of acacia catechu. It is unorganized drug. It is the extract, water extract or aqueous extract of hardwood of acacia catechu, family Leguminaceae. Its chemical constant. So it will have a 10% acacatechin. So it is a diastereoisomer of 5,7,3-4-tetrahydroflavone. ये छोड़ो, ये it has a 10% acacatechin. Acacatechin जो है, acacatechin is also known as acacia catechin, and it will undergo oxidation to catechotanic acid. Now other content of this plant is nothing but the quercetin. It does not contain chlorophyll, and it is known why it does not contain any chlorophyll, because it is a hardwood of plant. जो इनर मतलब गाबा बोलते हैं उसको, जो लकड़ी है उसका अंदर का, बाहर का नहीं, अंदर का मतलब गाबा सेंट्रल. तो इसमें अक्काकेटेशन होता है, इतना याद रखो. उसके बाद आता है केमिकल टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, वो पॉजिटिव देता है. उसके बाद फेरिक क्लोराइड का टेस्ट. उसके बाद यूजेस क्या है उसके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लैक. एज इट इज अ टैनिन कंटेनिंग ड्रग, इट इज एस्ट्रिंजेंट, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बॉइल्ड स्किन इरप्शंस, अल्सर्स, also used for the treatment of cough and diarrhea. Okay, it has a cooling and digestive properties. It is used for dyeing and tanning industry, dyeing and coloring of water, softening of water. जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी यूज करते हैं ब्लैक कैटेचू. इट विल रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ ड्रिलिंग बट, मतलब जो ड्रिलिंग करते हैं, जैसे आपका इसका ड्रिलिंग होता है, किसका, जो स्टील का ड्रिलिंग होता है, स्टील में अगर किसी को स्टील जो है, स्टील का ड्रिलिंग करना है आपको, उसमें एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग मड. तो उसका विस्कोसिटी डिक्रीज करने के लिए भी ब्लैक कैटेचू यूज किया. एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन. देन इट हैज एप्लीकेशन इन द लेदर इंडस्ट्री. जो लेदर का टैनिंग होता है वो उसमें भी यूज किया जाता है उसको. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेचिन ऐसा होता है. और एक कैटेकॉल होता है. कैटेकॉल मतलब फिनाइल विद 2 एडिशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. या आपको बाद में सिंथेटिक पैरासिम्पथेटिक में भी इंपॉर्टेंट है. ये कैटेचिन होता है. दैट्स इट. का आइसोलेशन प्रोसीजर वगैरह सब सेमेस्टर के लिए. दिस इज अ प्लांट ऑफ अकेशिया कैटेचू. ये प्लांट होता है और ये ऐसा उसका लकड़ी होता है. इट इज अ वुड ऑफ अकेशिया कैटेचू. नाउ यू कैन सी हियर देयर आर 3 portions. It is a bark. Outer portion is bark. Then just below the bark there is a yellow portion. Okay, that is not a hard. So whatever hardwood is nothing but the central portion. ये जो reddish portion दिख रहा है आपको, reddish, so that is nothing but the hardwood. Okay, so you have to separate this hardwood and you have to make a katta. You have to separate a katta. So katta will look like this. So जो भी आपके पान में यूज करते हैं आप कत्ता, रेडनेस मतलब जो पान खाने के बाद लाल कलर होता है मुंह का, वो क्यों होता है, उसमें कत्ता होता है. तो ये कत्ता है उसका. देन नेक्स्ट वन इज अ टेरोकार्पस. टैनिन कंटेनिंग ड्रग इज अ टेरोकार्पस. सो इट इज आल्सो नोन एज इंडियन किनो और टेरोकार्पस. इट इज अ ड्राइड juice of plant known as a
Pterocarpus marsupium. Dried juice of plant known as a Pterocarpus marsupium family Leguminaceae. बाद में इसका जो geographical source है और cultivation collection है, that is not important. Just remember Pterocarpus is known as Indian kino, Pterocarpus marsupium family Leguminaceae. So what is the content? 70 to 80% ketotanic acid, that is a leukocidal tannin. Leukocytes जो होते हैं उसको किल करने का, व्हाइट ब्लड सेल में ल्यूकोसाइट्स होते हैं अभी. So 70 to 80% ketotanic acid. Then kinored, anhydride of quinoin and more darker than ketotanic acid. So anhydride form of quinoin, which is more darker than ketotanic acid, that is known as kinored. Then alpha K pyrocatagen. So these are the constituents: ketotanic acid, then kinored, then this pyrocatagen. Okay. So out of this, ketotanic acid is a leukocidal. Then what is the use of this? So quinoa is a powerful astringent. It is used in treatment of diarrhea, dysentery, passive hemorrhage. It is also used in the toothache, and it is used in the diabetes. It is also used in the diabetes, used in the dyeing, tanning, and printing industry. Okay. Now this Pterocarpus has a hypoglycemic effect, so it will decrease your blood sugar level. So that's why this cups made up of wood of quinoa. जो किनो प्लांट है उसका जो वुड है, लकड़ी है, उससे कप बनाते हैं. कप जो चाय पीने का कप होता है आपका, उससे बनाते हैं और वो यूज करते हैं फॉर एंटी डायबिटीज, मतलब फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. सो इट हैज अ हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन. कप्स मेड अप वुड ऑफ किनो ट्री इज अवेलेबल विद द खादी एंड ग्रामोद्योग कमीशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. सो इतना याद रखो कि किनो नाम का एक प्लांट है, उसमें टैनिन्स होते हैं. इट इज नोन एज किनो. इट इज ऑब्टेन्ड एज अ ड्राइड जूस ऑफ Pterocarpus marsupium family Leguminaceae. It has a ketotanic acid, which is a leukocidal tannin. Then kinored, that is a anhydride quinoin and more darker than ketone. Then इसका use याद रखो आप कि it is a powerful astringent treatment of dysentery, diarrhea. ये जो डायरिया डिसेंट्री है उसमें हर एक ड्रग यूज होगा जो टेनिन होगा, जो टेनिन कंटेनिंग ड्रग्स है, जैसे आपका Pterocarpus हो गया, कैटेचो हो गया, लास्ट टाइम जो बोला था मैंने आपका. तो जो भी टेनिन कंटेनिंग ड्रग्स है वो इसमें यूज होंगे. इसमें एस्ट्रिंजेंट टू ब्लॉक द हीमोरेज, टू चेक द हीमोरेज, देन डायरिया, डिसेंट्री, उसमें यूज होगा ही होगा. इन एडिशन टू दैट, दिस Pterocarpus is used in the treatment of diabetes because it has a hypoglycemic. So it is adulterated with different type of quinoa. There is Botany Bay quinoa, that is Eucalyptus calophylla, Martiaceae family. Then African quinoa, Pterocarpus erinaceus. So African quinoa, Pterocarpus erinaceus, Pterocarpus erinaceus, that is known as African quinoa. Then Jamaica quinoa, it is a Jamaica. ये सब याद रखो आप. Cocopola urifera family Polygonaceae, that is a Jamaican quinoa. African quinoa is Pterocarpus erinaceus, quinoa tree. जैसे रबर होता है, रबर के जैसे होता है ये quinoa tree होता है, ये रबर के जैसे होता है. रबर का ट्री अगर देखा होगा किसने तो उस तरह का होता है. फाइटोकॉन्स्टेंट्स है ये, वही है marsupium. So it was all about the drug containing tannins. So now we'll see phenylpropanoids. Okay, so phenylpropanoids, they are also secondary metabolites of the plant. They are also found in the higher plants. Okay, so these are nothing but the phenolic compound. As the name indicate, they are the phenylpropanoids. Okay, means phenyl means phenyl ring will be there. Propanoids means propanoid ring will be there. So they will be a combination of phenyl ring plus propanoids. So they are the phenolic compound which are obtained from phenylalanine and tyrosine. जो अमीनो एसिड होते हैं उससे बनते हैं कौन? phenylpropanoid. Okay, so they will be biosynthesized from phenylalanine and tyrosine amino acids. They are the intermediates. They will be biosynthesized as an intermediate in the cyclic acid pathway. So phenylpropanoid unit, they will consist of phenyl ring attached to a 3-carbon side chain, or the 3-carbon side chain may be 1 or 2 units. So the combination of phenylpropane side chain, that is a 3-carbon atom present in the phenylpropanoid, does not have any nitrogen atom in the structure. Okay, so the presence of one or more hydroxyl group in the phenyl ring in the aromatic ring, so makes them phenylpropanoid or phenolic in nature. And that's why they are also known as plant phenolics. They are also known as plant phenolics because of this phenol, this benzene ring with
additional hydroxyl group. So it will impart a phenolic nature to them, and that's why they are also known as phenyl or plant phenolics. So phenylpropanoids, they are having phenyl ring plus propanide unit C3 units, maybe single or double. अगर double है तो उसको बोलेंगे C6. They are combination of phenyl ring plus propanide unit. Okay, sometimes they are known as a plant phenolics because they will have phenol in nature. So here is, for example, cinnamate. देखो phenyl ring plus propanide unit, cinnamic acid, cinnamic acid. So it is a cinnamaldehyde. Then it is a phenylpropane, and it is a coumarin. So all these are the phenylpropanide units. Classification of these phenylpropanoids compounds. So it may be either hydrocynnamic acid, example coumaric acid, caffeic acid, ferulic acid. Then phenylpropane like eugenol, anethol, cinnamaldehyde. ये सब आपको बाद में आ जाएगा. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि coumarins like coumarins, hydroxycoumarins and phenylcoumarins. Then bridged phenylpropanoids. They will have not side chain. With no side chain, with side chain. उसमें दो होता है, एक साइड चेन होता है उसमें और किसी में साइड चेन नहीं होता है. तो विथ साइड चेन हैविंग कार्बन आइटम एंड विथ साइड चेन हैविंग टू कार्बन आइटम. सो बाय phenylpropanoid lignans and flavonoids. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जस्ट आपको मालूम होना चाहिए. देन हाई मोलिकुलर वेट phenylpropanoid like lignins and now flavonoids. What are the flavonoids? Flavonoids are also secondary metabolite of plant. They are found in almost all fruits and vegetables. So that is known as flavonoids. These flavonoids, they are found in the almost all fruits and vegetables along with the carotenoids. So carotenoids are nothing but they are also phenylpropanoid unit. Okay, carotene, beta carotene. एक carotene से आपको दो विटामिन A मिलेगा एक carotene से. So they are responsible for the vivid color in the fruits. So whatever color of fruits and vegetables are there, so that is because of the carotenoids. So flavonoids are chemically polyphenolic compound. They contain 15 carbon atom, right? 2 benzene ring joined together by linear 3 carbon. Chemical nature of flavonoid are based on the C15 skeleton or chromin ring, bearing a second aromatic ring at a position of 3, 2, 3, 4. So ये क्या होता है मैं बोलता हूँ. So they are the large group of biologically active water-soluble plant compound such as anthocyanins and the flavones. That includes pigment ranging from color yellow to red or blue. मतलब जितना भी कलर होता है प्लांट का, that is because of either these flavonoids or tannin content. So जो flavonoids होते हैं वो कलर करते हैं कंपाउंड को. तो जितने भी येलो, जैसे आप ब्रोकोली देखते हो ग्रीन कलर का, वो क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से. जैसे आपका एप्पल है, एप्पल का कलर को क्यों होता है? फ्लेवोनॉइड की वजह से. ठीक है. They include the pigment ranging from color yellow to blue-red, occurring especially in the fruits, vegetables and herbs like grapes में होता है, citrus fruit में होता है, pepper में होता है, dill में होता है. तो ये structure of flavonoid. So what is the structure of flavonoid? So you will have 3 structure in the flavonoid. So 2 benzene ring attached with 1 pyran ring. 2 benzene ring. See, flavonoids are the low molecular weight polyphenolic substances based on the flavon nucleus. So this is a flavon nucleus. Right? So structure is numbered to differentiate the position of carbon rings. Or A, B, C. So ring A, ring B, and ring C. Okay. So ring A is attached to the ring C, which is known as a pyron ring. This is a pyron ring, 6-member ring with 1 oxygen. So if it is a 5-membered, it is known as a furan. So if it is 6-membered with 1 oxygen, it is known as a pyron ring. So pyron ring is attached with the benzene ring, and at the pyron ring, second position of pyron ring, there is another benzene ring. So these are nothing but the basic skeleton of flavonoid. There are different flavonoids in the nature. Anthocyanins. Okay. So anthocyanins will give you these colors like scarlet, रेड कलर, माव कलर, ब्लू कलर पिगमेंट. जितने भी ये प्लांट्स के पिगमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ एनी प्लांट और फ्रूट इज हैविंग रेड कलर, माव कलर, देन ब्लू कलर लाइक ब्लूबेरीज. यहाँ पे ब्लूबेरीज जो होता है, ब्लूबेरीज, उसको ब्लू कलर होता है. ये रेड कलर किसमें? एप्पल में आता है आपका, बेरीज में भी आता है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन्स. देन प्रो एंथोसाइनिन्स लाइक दे आर कलरलेस. अगर कलरलेस होते हैं प्रो एंथोसाइनिन्स. Anthocyanins, they will impart scarlet color, red color, mauve color, blue color to the plants.
Then flavonols. Flavonols are again colorless co-pigment. Then flavons, glycoflavons, bioflavonoids, chalcones and aurons. They will give you yellow pigment. Then flavons and isoflavons, both are colorless. ये होता है फ्लेवोन्स का स्ट्रक्चर होता है, आइसोफ्लेवोन का स्ट्रक्चर ये होता है फ्लेवोनॉल्स. सिमिलर स्ट्रक्चर है सबका. ये देखो यहाँ पे फ्लेवोन्स, यहाँ पे बेंजीन के यहाँ पे अगर आ गए तो उसको बोलेंगे आइसोफ्लेवोन्स. मतलब आइसो मतलब नियर और शेजारी, पड़ोसी. फ्लेवोन में ये बेंजीन रिंग कहाँ पे अटैच है? सेकंड पोजीशन पे अटैच. आइसो में क्या होगा? यहाँ से आके थर्ड पोजीशन पे होगा. ये देखो थर्ड पोजीशन. आइसो मीन्स नेबरर और आइसो मीन्स शेजारी. आइसो मीन्स नेबरर और पड़ोसी मतलब पड़ोसी कार्बन एटम पे जो लग गया उसको बोलेंगे आइसो. फ्लेवोनॉल्स और इसमें क्या डिफरेंस है? इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा, फ्लेवोनॉल्स बन जाएगा. वैसे ही सब कुछ है. नॉर फ्लेवोनॉल, चाल्कोन, एंथोसाइनिडीन्स, ये एंथोसाइनिडीन्स सब. ये कलर जो भी कलर होते हैं प्लांट के, बिकॉज ऑफ दिस लिग्नान्स. ये एक अगेन नया कंपाउंड है लिग्नान. एक्चुअली ये सिलेबस जो है ये पीसीआई के सिलेबस है, अकॉर्डिंगली नया टेस्ट किया है. तो मे भी इसमें कभी क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, तो इसका आपको मालूम होना जरूरी है. सो लिग्नान्स they are also secondary metabolites of plant. Again, low molecular weight polymer formed by coupling of two phenylpropane units. The phenylpropane units दो और ज्यादा है उसमें, तो उसको बोलेंगे lignan. So most commonly cinnamyl alcohol is a precursor for lignan. Cinnamyl alcohol is a precursor. ये cinnamyl alcohol हो गए, cinnamic acid हो गए. That is precursor for the lignans. Cinnamyl alcohol is a common precursor for lignan. From free radicals enzymatically, from the free radical or from enzymatically they will dimerize. मतलब दो डाइमर बन जाएंगे उसका. from aryl tetraline type lignan. example is podophyllitoxin, then dimethyl podophyllitoxin. then जो पोडोफाइलम में जो पोडोफाइलिटॉक्सिन होता है, दे आर नथिंग बट द लिग्नन. ये कैसे बनता है? देखो सिनामिक एसिड यहाँ पे है, तो उसका बन जाएगा अल्कोहल, सिनामिल अल्कोहल. मतलब ये सिनामिल अल्कोहल बन जाएगा. उसके सिनामिल अल्कोहल का डाइमराइजेशन होके ये आपको मिलेगा यहाँ पे लिग्नान. ये सब ये अराइल लिग्नान. उसके बाद में आपको मिलेगा पोडोफाइलिटॉक्सिन. ये तो उसके बाद में आता है आपका नया ड्रग नोन एज टी, जो आप डेली पीते हो, टी. ठीक है. सो व्हाट इज टी? टी इज नथिंग बट द एवरग्रीन श्रब ऑफ सेवरल अल्टरनेट ब्रांचेस. ये जो एक छोटा सा प्लांट होता है, एवरग्रीन श्रब. ठीक है. बड़ा भी, जैसे ट्री बोलेंगे उसको उतना बड़ा भी नहीं, और जिसको प्लांट बोलते हैं उतना छोटा भी नहीं. ये मीडियम साइज का होता है, एवरग्रीन श्रब हैविंग सेवरल अल्टरनेट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट. इसका क्या होता है, कहाँ पे कल्टीवेशन होता है वो आपको मालूम कि टी कहाँ पे आता है आसाम में. सो इट इज ऑल्सो नोन एज फोलिया थिया. So it is a leaf bud and leaves of plant Theacynesis family Theaceae. Theacynesis family Theaceae. आपका जो चाय का पत्ती आता है वो कहाँ से आता है? टी से आता है. टी मतलब ये Theacynesis family Theaceae, इसमें से आता है. माइक्रोस्कोपिक फीचर्स जो उसका ये छोड़ दो. उसमें केमिकल कॉन्स्टेंट्स, इसमें अल्कोलॉइड्स होते हैं, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन. ओके. सो प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट्स आर कैफीन that is nothing but trimethylxanthine, and it also has some tannin content. So that's why ये जो टी का प्लांट है, टी का प्लांट it may be either classified in both types, either drug containing tannin or drug containing alkaloids. So it has alkaloids as well as tannins. Okay. So alkaloids like caffeine, theophylline, theobromine, right? So caffeine is nothing but the trimethylxanthine, and theobromine is a dimethylxanthine. Then theophylline is also there. Along with these alkaloids, it has a catechin. ये alkaloids है, ये है pseudo alkaloids. Okay, they are not synthesized from amino acid. They are synthesized from purine bases. Tannin content is there. Okay, so percentage of caffeine in the tea is 1 to 5%. इसमें जो tannin content होता है, tannin content मैं बोलता हूँ, इसमें जो tannin content होता है वो होता है flavon 3-ol. ये flavonoids होते हैं, flavon 3-ol. गैलिक एसिड होता है tannin. ईपी कैटेचिन होता है, कैटेचिन होता है. ये कैटेचिन का स्ट्रक्चर है, ये ईपी कैटेचिन का स्ट्रक्चर है. जैसे सत्ता कपूर आती है, आपको बोलते हैं लिप्टन ग्रीन टी, इसमें है कैटेचिन जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल है और अच्छे है. तो ये सब क्या है? दे आर नथिंग बट द
flavonoids, or they are nothing but the polyphenol compounds of flavonoids. So catechin is a flavonoid, epicatechin is also flavonoid. They will act as an antioxidant. They will prevent free radical. They will prevent you from development of cancer. जो कैंसर बनता है आपको कैंसर बनने के प्रिवेंट करेंगे ये कैटेचिन्स. ठीक है, ये होता है टी में क्या होता है, दो दो कंपोनेंट होता है. एक तो अल्कोलाइड्स होता है, ये कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोपाइलिन. कैफीन इज नथिंग बट द ट्राइमिथाइलजेंथिन 1,3,6 ट्राइमिथाइलजेंथिन. देन थियोब्रोमिन डाइमिथाइलजेंथिन होता है थियोब्रोमिन, और ये थियोपाइलिन होता है. ठीक है, ये अल्कोलाइड्स है. एक टी में क्या अल्कोलाइड्स है. सो अल्कोलाइड प्रेजेंट इन द टी, caffeine, theophylline, theobromine. Tannins present in the tea, it is a gallic acid. Okay, and then flavonoid present in the tea, it is a catechin, epicatechin. Okay, ये these are the teas, cultivation of teas. आसाम में देखिए, आसाम में चाय के बागान होते हैं, ये इस तरीके से होता है. तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है known as a Muroxide test. So it is a specific test for purine type of alkaloids like your caffeine, theophylline, theobromine. So Muroxide test, it is very important. Remember this. ये GPAT में कभी पूछ लेते. So इसमें इसका यूज क्या है टी का. कैफीन, it is a stimulatory in nature. It will have stimulant effect on heart and nervous system. जैसे आप थोड़ा सा बोर हो जाते हो, चाय पीते हो, आप जैसे ही चाय पीते हो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी. जैसे ही चाय पीते हो आपको यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा. मतलब कैफीन इज अ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन हार्ट एंड नर्वस सिस्टम. इट इज अ डायरेटिक also. Caffeine is a diuretic also. So stimulant, diuretic, it is an analgesic activity also. Caffeine from tea leaves are mixed with the polyphenols. तो इसमें polyphenols होते हैं, जैसे catechin हो गया आपका, epicatechin हो गया आपका. तो उसका क्या यूज है. So catechin, epicatechin 3 gallate, they will show strong antioxidant activity. That is they will scavenge फ्री रेडिकल्स. स्कैवेंज मतलब क्या है कि जो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं, तो फ्री रेडिकल उसको पकड़ के उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और उसको रिमूव कर देगा, ताकि वो फ्री रेडिकल जो होते हैं जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, फॉर्मिल ग्रुप हो गया, तो वो आपको कैंसर पैदा करते हैं, तो उसको वो कैच करके रिमूव कर देता है. कौन, जो कैटेचिन्स होते हैं. दैट्स व्हाई वो सतर्क होते हैं. इसमें एपिक कैटेचिन्स, और वो कैटेचिन्स आपके स्किन के लिए अच्छे होते हैं, ग्लोइंग के लिए अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो सिर्फ आपको लुभाने के लिए होता है. ग्रीन टी, टैनिन कंटेंट और फ्लेवोनॉइड कंटेंट ऑफ दिस टी, दे विल एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट. इतना याद रखो. सिर्फ इपिकेटेचिन एंड कैटेचिन 3 गैलेट रहता है उसमें, और उसमें जो अल्कोलाइड होता है कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोपाइलिन, उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है. दैट इज नथिंग बट द म्यूरोक्साइड टेस्ट. इतना याद रखो. नाउ नेक्स्ट ड्रग कंटेनिंग फ्लेवोनॉइड इज अ रूटा. सो ओके, सो रूटा is known as a Ruta is often from the dried and fresh leaves of Ruta graveolens family Rutaceae. जो रूटा का प्लांट होता है उस क्या होता है, dried and fresh leaves of plant Ruta graveolensis family Rutaceae. Okay, so there are different varieties of Ruta. So Ruta graveolensis, Ruta chelepnesis. Then ये छोड़ो geographical source वगैरह, तो TS वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें माइक्रोस्कोप. ये होता है रूटा का प्लांट, तो उसमें कंटेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट इज द मेडिकल what is the chemical constituent present in ruta, that is the important. So it has a flavonoids, polyphenols. Okay, so commonly known phytochemical of ruta graveolens are acridone, alkaloids, coumarins, volatile substances, terpenoids and flavonoids. So out of these, flavonoids content of ruta is very important. Okay, saponin, tannin and glycoside also are present. The most important flavonoids from the ruta graveolensis. In the ruta graveolensis, two active flavonoids are important, rutin and quercetin. These two flavonoids are obtained from ruta graveolensis. It is very important. Rutin was isolated first and then after quercetin. Okay, so rutin and quercetin, these are two flavonoids isolated from ruta graveolensis. They will act as an antioxidant. They also has a role in the prevention of cardiac disease and preservability of your blood vessels. So certain aliphatic alcohol acids, ketones are also there, but they are not much important. So what is used? So it is immunogogue, means it will increase your immunity. Hemostat, it will prevent the
bleeding. Okay, then intestinal antispasmodic, so it will relieve your spasm. अगर आपके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है तो वो प्रिवेंट करेगा. It is a uterine stimulant, vermifuge. It is used in the cold and fever. It is used in the cold and fever treatment in Chinese medicine. Then it is also aphrodisiac, choleretic. In the choleretic means it will increase the choleretic means it will increase the bile acid formation. Aphrodisiac means it will increase the sexual desire. Then it is a aromatic stimulant. Then suppressing the menses. जो menstrual cycle होता है लेडीज में उसको सप्रेस करेगा ये. So these are the very powerful antioxidant, rutin and quercetin from the rotagravelins. ये कामेरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है. So ये रूटीन का स्ट्रक्चर, रूटीन. ये पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलीफ्लेवोनाइड, फिनाइलप्रोपेनॉइड और फ्लेवोनाइड का बेसिक स्ट्रक्चर है वो रूटीन का है.